Maharashtra, which involved the Shiv Sena MLA Sanjay Gaikwad, who seems to be once again at a center of controversy after this video emerged showing him punching a canteen worker at the Akashvani MLA hostel in Mumbai. Now, in this video, Gaikwad is seen storming into the canteen, scolding the manager, forcing him to smell the stale dal and rice that he believes that he was given, food that would have allegedly poisoned him, and then striking the staff member seated at the billing counter, thrashing and kicking him. Now, in response to the poor quality food served to him, he allegedly confronted the staff along with others as well and assaulted one of the canteen employees. Even when confronted by Times Now, the leader shows no remorse, brazenly justifying his actions, calling him as a boxer and then claiming that this is my way of delivering justice. Take a look. मैंने अगर कायदा तोड़ा है तो उन्होंने मेरी कंप्लेंट करना, और कायदा हाथ में लेने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने के लिए कोई हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं है, कोई मराठी अमराठी का झगड़ा नहीं है। एक ओनर और एक ग्राहक, ये दोनों का झगड़ा है। यहाँ कायदा सुव्यवस्था का कोई संबंध नहीं आता। वो ओनर को आपके सरकार के लोगों ने रखा है, आपकी सरकारी पावर में, तो आप सरकार से बात कर सकते हैं। वो ओनर 30 साल से है। अभी आप निकाल सकते थे उसको, अगर प्रॉब्लम है, आप सरकार में हो, ये ऐसा मार के प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। देखो, अभी मारने के बाद ही उसमें कार्रवाई होगी। तो आपसे आपसे ये पूछेंगे, जो आपने जो किया, आप उसको, आपका जस्टिफिकेशन करते हो, आप उसको, आपको लगता है कि सही किया आपने? मेरा खुद का जस्टिस है। Now, the Shinde Sena MLA's actions that have drawn widespread condemnation, not just from the opposition, but also from his own party and the government. Chief Minister Devendra Fadnavis has criticized his behavior, saying that such actions by public representatives send out a wrong message. Taking cognizance of the matter, the Chief Minister said that action will be taken if necessary. But the Deputy Chief Minister Eknath Shinde, who is also the chief of the Shiv Sena, has condemned the incident, saying that violence in any form is not tolerable. खरं म्हणजे मी देखील त्याची माहिती घेतली आणि तो व्हिडिओ मी देखील स्वतः बघितलेला आहे, आणि निश्चितच अशा प्रकारचं वर्तन हे आपल्या कोणाहीकरता भूषणावं नाही। याच्याने विधिमंडळाची आणि आमदार म्हणून आपली सगळ्यांचीच प्रतिष्ठा, प्रतिमा कुठेतरी कमी होते। मला असं वाटतं की अतिशय गंभीर बाब आहे। आपण आणि माननीय अध्यक्ष या दोघांनी याचा कॉग्निझन्स घ्यावा आणि या संदर्भात काय पुढील कारवाई करायची ते आपण करावी। तो वॉमिटिंग हो गया और इसलिए उन्होंने गुस्से में आकर वो मारपीट की। उसका मैं समर्थन नहीं करूँगा, और हम लोक प्रतिनिधि है, विधायक है, तो हमारी जिम्मेदारी है। कानूनी कार्रवाई के लिए हमारे पास अधिकार है, तो अगर रिजन गलत होता है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन मारपीट करना ये उचित नहीं है। Now, criticism coming in for the MLA's behavior. Let's put that out, because this is not for the first time in Maharashtra that a public representative or a political leader has behaved like a goon. Now, in the past month, MNS workers who have gone on a rampage in the state, assaulting people who did not know how to speak Marathi or vandalizing properties that who have spoken against their Marathi campaign. Now, the most prominent of MNS's Gundagardi was seen in Thane recently, where a shopkeeper was slapped and assaulted brutally for failing to speak in Marathi. Pictures that have now coming in, is this any way to justify violence? Let's put that out as far as the MLA canteen